Okay, now starts class. In the last class, what we have covered? Belt, belt, and clutch and flywheel. First, what is belt? Okay, definition of belt. Then, what are the factors related to important factor related to the belt drive? Okay, is it clear? If any doubt, then you are free to ask. Okay, types of belt. What are the different types of the belt? Light belt drive, medium belt drive, and heavy belt drive. Is it clear? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? What is light belt drive? In a light belt drive, the drive system which is ranges less than 10 meter per second. Okay, this belt drive transmit the small power within the range of 10 meter per second. Is it clear? If the belt drive which is possible to transfer the speed above 10 to 22 meter per second, then which type of drive which is used? That is medium drive. Okay, is it clear? If you want to drive more than 22 meter per second, okay, then which type of drive which is used? That is heavy drive. Is it clear? Then again, types of belt. What is flat belt, V belt and a circular belt? ठीक है, लास्ट क्लास में बता चुका हूँ. यहाँ तक किसी को डाउट है? एनी डाउट्स? This is only theory portion. Okay, after the theory portion, we will start the MCQ related MCQ questions. Okay, which is very important for your exam point of view. Okay, is it clear? What is flat belt drive, V belt drive, and circular belt drive? ठीक है. In which belt friction is high? In which belt? Flat belt, V belt, or circular belt? Tell me anyone. Mostly for more power transmission, which type of belt which is used? That is V belt drive, because in which having more frictions. Okay, if frictions is very high, then it is possible to transfer power from very high power. Okay, if the belt is sleepy or more sleep, then which is not possible to transfer power or very high power. Okay, is it clear? So which type of belt which is used? That is V belt. Mostly you have seen many of the company or instrument or motor vehicle. Which type of belt generally used? That is V belt. Can I use rope in place of circular belt? No, rope is another, but which is depend upon the which type of power you transmit. Okay, if you want to transmit more power or no sleep or no power loss, then you use proper type of belt. Okay, it will depend upon the application of belt. Okay, or type of power transmission. Is it clear? You see here flat belted drive, you see here V belt drive. If you want to transmit with the help of V belt, okay, then the two pulleys are very near to each other. Okay, sir, you can revise fast once more about belt please. शिवा साय. ओके, ठीक है, एक बार अपन मोटा मोटा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि लास्ट क्लास में गैप बहुत ज़्यादा हो गया था. ठीक है, ये आपका स्टार्टिंग क्लास है. ठीक है, व्हाट इज बेल्ट? ठीक है, बेल्ट इज ए बेल्ट और इसी को समटाइम्स रोप भी बोलते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर? व्हाट इज बेल्ट? बेल्ट विच इज बेल्ट और रोप which is also known as rope. Sometimes it is known as ropes or sometimes it is called belt. Okay, this is used to transmit power from one shaft to another shaft, which is depend upon the type of power supply. Okay, with the help of pulley. Is it clear? If you want to transmit the power, okay, if you want to transmit the power from with the help of pulley system, then which is used, that is belt drive. Okay, if you want to transfer with the help of a gear, okay, but belt and a gear, which type of mechanism generally used to transmit or power loss? uh, Suppose if you use belt drive system and a gear system. Okay, so in which of the drive having losses more, फ्रिक्शन लॉसेस और पावर लॉसेस किस में ज्यादा होगा? ठीक है, बेल्ट ड्राइव में होगा कि गियर में होगा? बताओ. टेल मी वन थिंग. if you want to transfer power with the help of both belt drive system and the gear system. Okay, so
पावर लॉसेस मैक्सिमम किस में होगा? इफ यू वांट टू ट्रांसमिट पावर, same type of power. Okay, this is your gear mechanism and this is your belt system. If you want to transmit power from here to here, and this is your gear system. Okay, so maximum power losses in which type mechanism? That is belt drive system. Okay, why? Because sometimes this belt at the time of power transmission, the belt if the belt is loose, then maximum power losses generated in the belt drive. Okay, so mainly because of more power losses in the belt, then it is not used in many of the application. Okay, क्योंकि आपका बेल्ट ड्राइव सिस्टम है, इसमें इसमें ये भी हो सकता है जैसे आपका बेल्ट जो है लूज हो गया, ठीक है, या फिर आपका स्पीड कम हो गया, तो उस केस में जो है पावर लॉसेस बहुत कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, सॉरी, ठीक है। इफ योर बेल्ट इज नॉट टू टाइट, okay, if the belt is loose or sometimes speed is very low, then power losses more in the belt drive system. Is it clear? Okay, so mainly power transmission with the help of belt system, which of the factors mainly depend? That is velocity of the belt. Okay, if the velocity of the belt maximum, then it is required to transmit power from one shaft to another shaft is very high. Okay, that mainly tension is very important. Okay, if the tension is very high, tension means this is one pulley, you see here, this is a small size pulley and this is a big size pulley. Okay, so if you want to transmit power from here, this is your driver, this is a your driver, or this is a driven. Okay, so this is a tight, that is T1, in which having tension, and this is T2, in which having less tension or loose type. Okay, because if you want to transfer speed from here to here, okay, so maximum tension in which type of section? That is T1 section. Okay, so maximum tension कहाँ पे होगा आपका? यहाँ पे होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका पावर रिवर्स हो जा रहा है. इज इट क्लियर? एंड first velocity of the belt, second tension under which the belt is placed on the pulley. This is also very important for power transmission. If the tension is very low, then maximum chances to lose the power. Okay, is it clear? Again, the arc of contact between the belt and the pulley system. Okay, if you, this is your pulley system and the arc of contact, which is, this is arc of contact maximum. Okay, many of the belt you see, you saw this type 90 डिग्री. ओके, इन दिस टाइप, ठीक है, कुछ कुछ बेल्ट में इस टाइप से रहता है और कुछ बेल्ट में इस टाइप से रहता है, ऐसा, ठीक है. दिस इज 120 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री. कॉन्टेक्ट सरफेस बिटवीन द pulley and belt, that is arc of contact. This is known as arc of contact. If the arc of contact is 90 degree, then it is chances to transfer more power with the help of belt. Okay, so many of the exam, you ask the arc angle, that is 90 degree. Okay, in the question you ask the which what is the angle between the arc of the contact. Okay, so here यदि क्वेश्चन में ये पूछेगा कि मैक्सिमम आर्क ऑफ कंटेक्ट, मैक्सिमम पावर ट्रांसमिशन के लिए आर्क ऑफ कंटेक्ट कितना होना चाहिए, तो उस केस में आपको 90 डिग्री लेना है. ओके, इज इट क्लियर? आर्क ऑफ कंटेक्ट इज नथिंग बट this is your arc of contact. Okay, this is your pulley. Okay, you see here, this is your pulley system. Okay, and the belt is connected in this type. Okay, so this is a half circle, is the arc of contact. Half arc means half circle. This half circle is the arc of contact. Is it clear? You see here arc of contact. Okay, this is your arc of contact, you see. Is it clear? This is your smaller pulley, this is your bigger pulley. Okay, so arc of contact is this one. Okay, maximum the arc of contact varies from 90 to 130. Is it clear? This is your arc of contact, and in the larger pulley, this is your arc of contact. Is it clear? And C, what is C? C is the center distance between the two pulley, this one and this one. How to calculate the center distance? इसके लिए एक फार्मूला होता है, ठीक है.
इसमें देखो व्हाट इज द सेंटर ऑफ डिस्टेंस, एक मिनट, यहाँ पे देखो व्हाट इज द आर्क ऑफ कंटेक्ट, हाउ मेनी एंगल्स you see here in this figure, arc of contact, this is your cross belt in which the belt are arranged in this type. Is it clear? The belts are arranged in this type, that is cross belt drive. Okay, this is your tight side, because if this is your driver and this is a driving member, okay, this is your driver in which power is available in this pulley. Okay, this is a smaller pulley in which having the power, and this will help to rotate in this pulley. Okay, so tight side is where this is your tight side, because the pulley is rotate about this direction. Is it clear? What is the angle between this arc of contact, yeah, in the bigger pulley? This is your bigger pulley. Okay, so this is your 180 degree and more than 180 degree now. You see here, this is half circle, means this is your arc of contact, ना कि here. Okay, मीन्स जितना आपका बेल्ट जो है कवर करेगा उतने को आपको एंगल मेजर करना है. ओके, दिस इज योर आर्क ऑफ कंटेक्ट विच इज ए मोर देन 180 डिग्री. ठीक है, इज इट क्लियर? देखो अलग अलग में अलग अलग रहता है आर्क ऑफ कंटेक्ट, उतना डीपली में जाने की जरूरत नहीं है, जितना इंपॉर्टेंट है उतने को देखते हैं. ठीक है, ठीक है. उसके बाद जो आपका पावर ट्रांसमिशन जो यूज करते हैं उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि द कंडीशन विच इज यूज्ड, व्हाट टाइप ऑफ कंडीशन के लिए आप बेल्ट को यूज कर रहे हो. ठीक है, विच टाइप ऑफ कंडीशन विच इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पावर. इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन हो सकता है? द शाफ्ट शुड बी प्रॉपर्ली लाइन. ओके, इफ यू वांट टू ट्रांसमिट द पावर, देन which type of arrangement is necessary, yeah, also depend upon. Okay, the pulley should not too close or too close or too open. Okay, ठीक है, आपका जो पुली है वो ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए और ना ही ज्यादा नजदीक नहीं होना चाहिए. इज इट क्लियर? ठीक है, ये आपका कंडीशन है, इसको एक बार देख लेना. if you want to use belt drive, okay, so which type of factor which is very important? First, speed of the driving and driven shaft. Okay, this is very important for belt drive system, because sometimes belt drive system, if you want to transfer small power say small power to higher power, then it is required first flat belt drive, then V belt drive, then circular belt drive. Okay, so this is very important. ये फैक्टर है, एक बार इसको आप रीड कर लेना. ठीक है, उतना डीपली में जाने की जरूरत नहीं है, इससे अपन एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ठीक है, ये फैक्टर है, आप एक बार रीड कर लो कि क्या क्या फैक्टर डिपेंड करते हैं. फर्स्ट, स्पीड ऑफ द ड्राइविंग एंड ड्राइवन शाफ्ट. ठीक है, स्पीड रिडक्शन रेशियो. व्हाट इज स्पीड रिडक्शन रेशियो? What is speed reduction ratio? Okay, suppose this is a one pulley system and this is another pulley system. Okay, so if you want to transmit power, okay, from here to here, okay, this is your driver and this is your driven. Okay, difference between belt and belt drive. Belt, what is belt? Only this is a rope is the belt. Okay, this rope is belt. If the belt is using for transmission of power with the help of pulley, so whole this whole arrangement which is known as belt drive. Okay, this whole arrangement which is known as belt drive. Okay, only single rope, और एक तरह से बोल सकते हो जो आपका लेदर से बना हुआ रहता है, दिस इज मेड ओनली विद द हेल्प ऑफ या by the use of leather. Okay, this is your putty or sometimes it is known as belt or rope. Okay, but if with the help of belt and pulley arrangement system, this whole pulley arrangement system and the belt arrangement system which is used to transmit power from, this is a one shaft, this is another shaft. Okay, means ये वाला आपका पहला शाफ्ट है, ये वाला आपका दूसरा शाफ्ट है. ठीक है, so if you want to transmit the power from this shaft to this shaft, so this whole arrangement which is known as belt drive system. Okay, if you want to use gear system, then it is known as gear drive system. Okay, ये आपका ड्राइव है जिसमें आपका पूरा अरेंजमेंट रहेगा, उसको ड्राइव बोलेंगे. बेल्ट एक सिंपल आपका रोबस है. ठीक है, रोप है. ठीक है, जो कि आपका लेदर से बना हुआ रहता है. इट इज क्लियर? So what is speed reduction ratio? This is your speed reduction ratio, or sometimes it is known as
in belt ratio. Okay, so what is speed reduction ratio? Suppose the diameter of the bigger pulley is D2 and a smaller pulley is D1. So what is your speed reduction ratio? In the question many times ask what is the speed reduction ratio? In the question given that the diameter of the driver and the diameter of the driver. Okay, so what is the speed reduction ratio? You see here, speed reduction ratio. How to calculate the speed reduction ratio? That means generally the speed reduction ratio is very high, means more than 1. Okay, so d2 by d1, good. Shiva Sai, good. d2 by d1 and in terms of speed क्या होगा? स्पीड में क्या होगा? d2 by d1, that is a speed reduction ratio in terms of diameter, but in terms of speed, if the speed of first gear is n1, okay, if the speed of the gear first is n1 and the speed of the second pulley is n2, so what is the speed reduction ratio in terms of speed? That is n1 divided by n2. ओके, ये याद रखना, जनरली क्वेश्चन में ये आ सकता है, इस टाइप से जनरली छोटा सा क्वेश्चन आपको दे सकता है. ओके, so remember it. Is it clear? Then another center distance between the shaft. What is center distance? What is center distance? Suppose this is one pulley, this is one pulley. Okay, one pulley and second pulley, the distance between this center line. Okay, this is one, this is one, so this is the your center distance between the two shaft, that is this is denoted by C. Okay, what is the center distance? First pulley center and the second pulley center distance between this one. Okay, so this is known as center distance between the shaft. Okay, पॉजिटिव ड्राइव रिक्वायरमेंट. ठीक है, ये क्लियर है? इफ यू वांट टू ट्रांसमिट, if you want to use belt drive system, then that is positive drive system. Positive means if you want to transmit in this direction, okay, and means आपका clockwise direction, that is positive drive requirement. Positive drive means there is no chance to lose the power. If you want to transmit the accurate power with the help of belt system, then it is required a positive drive requirement. Means what is the positive drive requirement? मीन्स इसमें आपका जो पावर लॉसेस है वो पॉसिबल नहीं होगा. ठीक है, पावर लॉसेस का पॉसिबल नहीं होगा जब आपका पुलिस सिस्टम का अरेंजमेंट अच्छे से रहेगा, दोनों का जो अरेंजमेंट है वो टाइट रहेगा, उस केस में आपको पावर लॉसेस का चांस ही नहीं रहेगा. ठीक है, suppose one pulley is this one and another pulley is this one. Okay, so in this in this arrangement, having the belt in this type, like a very too long length. Okay, this type and loose this type. ओके, मीन्स आपका जो बेल्ट है वो इस टाइप से लूज रहेगा, तो उस केस में पावर ट्रांसमिशन में आपको एक्चुअल एग्जैक्ट पावर ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा. ठीक है, शाफ्ट के लेआउट पर भी डिपेंड करेगा कि आपका शाफ्ट के लेआउट सर्कुलर सेक्शन है कि प्रॉपर स्मूथ सेक्शन है. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. स्पेस अवेलेबल एंड सर्विस कंडीशन. इफ यू सर्विस द बेल्ट विद इन प्रॉपर टाइम, देन बेल्ट टाइप सिस्टम इज वेरी हेल्पफुल. ओके, यदि आपका सर्विस प्रॉपर नहीं करोगे तो क्या होगा, समय पर बेल्ट जो है फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाएगा, घिस जाएगा. उसमें एक छोटा सा लुब्रिकेंट डालते हैं जो आपका हीट को रिमूव करते हैं. बिकॉज इफ बेल्ट ड्राइव सिस्टम इज जनरली यूज रन मेनी टाइम्स, देन इट इज चांसेस टू फ्रैक्चर विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है, जैसे आपका फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, गर्म होकर ये टूट सकता है. इस कारण इसमें समय समय पर क्या डालते हैं, लुब्रिकेंट डालते रहते हैं. देखे होंगे लोग. ठीक है, ये चीज देखे होंगे. इज इट क्लियर? देन व्हाट इज अ बेल्ट ड्राइव सिस्टम? दिस इज a 3 types of belt drive system. You see here. ठीक है, if you want to transmit light belt, that means 10 meter per second power transmit, then and that is mainly used in agriculture machine. you देखे होंगे जो आपका एग्रीकल्चरल मशीन जैसे ट्रैक्टर हो गया, वहां पे
ये सब यूज होता है लाइट ड्राइव सिस्टम। जो छोटा छोटा मशीन हो गया वहां पे दिस टाइप ऑफ लाइट ड्राइव सिस्टम विच इज यूज्ड। ओके, मीडियम में क्या हो जाएगा, इफ द स्पीड रेंजेस फ्रॉम 10 to 20 मीटर पर सेकेंड, 10 to 22 मीटर पर सेकेंड, देन मीडियम ड्राइव सिस्टम विच इज यूज्ड। ठीक है, ये आपका किस में यूज होगा, ये आपका लेथ मशीन में भी यूज होता है ना, देखना लेथ मशीन हो गया या फिर जो आपका मोटर हो गया, ठीक है, वहां पे जो बेल्ट लगा हुआ रहता है उसमें भी यूज होता है। ठीक है, देन उसके बाद हैवी ड्यूटी, जो आपका बहुत ज्यादा पावर रिक्वायरमेंट होगा वहां पे यूज होता है, जैसे कि आपका कंप्रेसर हो गया, जनरेटर हो गया। ठीक है, ये क्लियर है। देखो यहाँ पे हैवी ड्राइव सिस्टम विच इज यूज इन द कंप्रेसर एंड जनरेटर एंड विच इज पॉसिबल टू ट्रांसमिट द स्पीड अबव द 22 मीटर पर सेकेंड। ओके, more than na, if you want to transmit the power above 22 meter per second, which is used in the compressor and generator, because if in the generator uses belt, then chances of power losses with the help of belt, then this is not capable to generate the electricity. Okay, so proper generation of electricity in the generator, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज हैवी ड्राइव सिस्टम। ओके, ये आपको पता ही चल जाएगा कि आपको मतलब हैवी ड्राइव मीन्स एक तरह से समझ सकते हो, मीन्स आपको ज्यादा पावर ट्रांसमिशन करने की जरूरत पड़ेगा। मीडियम ड्राइव के लिए आप एक तरह से देख सकते हो क्या होगा, बताओ मीडियम ड्राइव के लिए। एग्रीकल्चर मशीन तो इसमें हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर मशीन ट्रैक्टर का भी हो गया है, ठीक है, एक तरह से। और उसमें जैसे कि आपको ज्यादा पावर ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ेगा तो आपका ट्रैक्टर में भी ये आपका दोनों यूज होगा। ठीक है, ट्रैक्टर में भी यूज होगा और मीन्स आपका एग्रीकल्चर मशीन में बहुत सारा मशीन आ जाता है ना, स्मॉल मशीन जो छोटे छोटे मशीन रहता है। जनरली इफ यू वांट टू ट्रांसमिट लाइट पावर, ओके, दैट मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड, सो दैट इज ए स्मॉल मशीन। तो विच टाइप ऑफ ड्राइव विच इज यूज्ड, दैट इज लाइट ड्राइव सिस्टम। मीडियम में आपका ट्रैक्टर आ जाएगा, ठीक है, हार्वेस्टर वगैरह भी आ जाएगा, ठीक है, ट्रैक्टर वगैरह आ जाएगा। ठीक है, ये लाइट ड्राइव सिस्टम में आपका छोटा जो मशीन जैसे आपका हॉलर मिल हो गया, हॉलर मिल हो गया, ये सब में यूज होता है। ठीक है, इज इट क्लियर। ठीक है, देन व्हाट इज द फ्लैट बेल्ट ड्राइव इन विच हैविंग द जो द सेक्शन ऑफ द बेल्ट इन विच हैविंग फ्लैट सेक्शन। ओके, दिस इज योर फ्लैट बेल्ट ड्राइव। दिस इज mainly used in the workshops or factories which is used for transmit the moderate power। ओके, जैसे आपका मॉडरेट पावर ट्रांसमिट करना है उस केस में आपको फ्लैट बेल्ट यूज करना पड़ेगा, जिसमें आपका जो पुली का जो डिस्टेंस है इन विच नॉट मोर देन 8 मीटर, द पुली डिस्टेंस नॉट मोर देन 8 मीटर। ठीक है, ये क्लियर है। जो आपको पुली डिस्टेंस है वो 8 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। देन दिस इज योर वी बेल्ट ड्राइव इन विच हैविंग द बेल्ट इन वी टाइप। ओके, दिस इज योर सर्कुलर बेल्ट, you see one by one v belt है। this is also used in the factories or workshop where larger amount of power transmitted। ओके, इसमें आपका जो पुली है वो बहुत ही क्लोज रहेगा। ठीक है, उसमें क्या रह जाएगा 8 मीटर, इसमें क्या रह जाएगा 8 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें थोड़ा 8 मीटर से ज्यादा होगा वी बेल्ट में। ठीक है, मीन्स आपका एक स्पीड और डिस्टेंस के बीच में ये हो सकता है। ठीक है, सर्कुलर बेल्ट मीन्स आपका 8 मीटर से ज्यादा रहेगा। देखो यहाँ पे if you want to transmit the power very high and the pulley distance that is 8 meter per second, the center of the pulley distance that is 8 मीटर पर सेकंड से ज्यादा होगा, उस केस में आप सर्कुलर बेल्ट ड्राइव सिस्टम यूज करोगे। ठीक है, बेल्ट को समटाइम्स रोप भी बोलते हैं, ये याद रखना। ठीक है, इज इट क्लियर वी बेल्ट और सर्कुलर बेल्ट। ठीक है, यहाँ पे देखो इफ ए ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर is to be transmitted, then single belt may not be sufficient in such cases, v belt or circular belt which is used। ओके, अलग अलग टाइप से बेल्ट आता है, पहले से अभी सिंपल है। देखो इस टाइप से बेल्ट है, ये आपका नॉर्मल बेल्ट है, दिस इज ए नॉर्मल बेल्ट। ठीक है, इस टाइप दिस टाइप से बेल्ट विच इज यूज्ड इन द मिल। ठीक है, हॉलर मिल, दिस टाइप्स ऑफ बेल्ट ड्राइव सिस्टम विच इज यूज्ड इन द हॉलर मिल। ओके, देखो इस टाइप से बेल्ट रहेगा, इसी में आपका जो बेल्ट का सेक्शन इस टाइप से रहेगा। इफ द बेल्ट सेक्शन इन दिस टाइप वी बेल्ट है, दिस इज नोन एज वी बेल्ट इन विच हैविंग दिस सेक्शन इन ए वी शेप। ओके, रॉ एज दैट कट इन द वी शेप, इस कारण इसको वी बेल्ट बोलते हैं। ठीक है, देखो इस टाइप से अरेंजमेंट रहता है बेल्ट का।
इज इट क्लियर? किसी को डाउट है यहाँ तक? ठीक है, if you have any doubt, then you are free to ask what is the belt drive, any system or any range. Okay, उतना डीपली में जाने की जरूरत नहीं है, अपन उतना ही कवर करेंगे जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ओके, in this section we will cover only the topic and then उससे related MCQ questions that will help to your examination. Okay, ठीक है. ओपन बेल्ट ड्राइव, व्हाट इज ओपन बेल्ट ड्राइव? in which having the belt are connected in this type, that is open belt drive. This is a open belt system. This is open belt drive in which having, this is one pulley system and this is another pulley system. Okay, so the pulley arrangement like in this type, that is known as open belt, and this is your cross belt. Okay, in which the belt are arranged in this type like a cross, that is known as cross belt. Okay, cross belt is nothing but in which the arrangement of this belt system in this type like a cross. सपोज इसमें एक बार आपका देखो, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओपन बेल्ट ड्राइव एंड क्रॉस बेल्ट ड्राइव? इन द ओपन बेल्ट ड्राइव, दिस इज योर ओपन बेल्ट ड्राइव. ओके, you see first, this is your example. Okay, this is your open belt drive and this is your cross belt drive. Okay, so here what, this is your arc of contact. Okay, this is your arc of contact. Here arc of contact, that is 90 degree, 180 degree, sorry, this is 180 degree because arc of contact, that is 180 degree. Okay, this is arc of contact. Here this is also arc of contact, that is half circle. Okay, but if you use the cross belt drive, okay, so what, cross belt drive system in which the arc of contact which is increases, means यदि आपका arc of contact ज्यादा connected रहेगा तो क्या होगा, उस केस में पावर लॉसेस का चांस कम हो जाएगा. ठीक है, किसमें पावर लॉसेस ज्यादा होगा? इन विच टाइप ऑफ बेल्ट power losses is maximum, open belt drive system or cross belt drive system? Tell me anyone. Suppose if you want to use open belt drive system and cross belt drive system, okay, so which type of belt drive system having more losses? किसमें होगा जी लॉसेस, किसमें ज्यादा होगा? ऑब्वियस, ओपन बेल्ट ड्राइव, बिकॉज देयर इज ए वेरी लो arc of contact, because this is your arc of contact which is a 180 degree. Okay, this is a cross belt drive in which having the, this is your arc of contact maximum 75% arc is covered. Okay, मीन्स आपका ये आपका सर्कल हो गया, इसमें आपका 1/4 मीन्स 270, 1/4 रहेगा. ये पता है आर्क ऑफ कंटेक्ट इसमें कितना है? 1/4 है, 3/4, सॉरी 3/4 मीन्स 75% arc of contact. Okay, only 25% arc leave. Okay, okay, is it clear? ठीक है, यहां से समझ आया? आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि इन विच टाइप ऑफ बेल्ट ड्राइव सिस्टम हैविंग द मैक्सिमम पावर लॉसेस. ठीक है, तो वहां पे आपको समझ आ जाएगा कि आपको किसको करेक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, in the question you asked which type of belt, that is open belt or cross belt, maximum power losses available, that is open belt system, or if you want to transmit more power, which type of belt drive system used. Okay, तो वहां पे आपको क्या आंसर देना है? that is cross belt drive system. if you want to transmit the more power, then which type of belt drive system used, that is crossed belt drive system. ठीक है, ये बात याद रखना. Is it clear? This is used for more power and no loss. Okay, यहाँ पे आपका लेस पावर होगा and chances to power loss. Okay, is it clear? Then V belt drive system और flat belt drive system. यहाँ पे भी देखो, this is your V belt. Okay, in which having the
बेल्ट सेक्शन लाइक दिस टाइप. ओके, इसमें बेल्ट का जो सेक्शन है वो इस टाइप से रहेगा, दैट इज नोन एज वी बेल्ट. This is your flat belt in which having this is a flat type. Section of the belt is having V shape. This is known as V belt. If the section of the belt is having flat type, then that is known as flat belt drive. If the section is having टाइमिंग बेल्ट है, इसमें क्या रहता है, ऐसे ऐसे रहता है इस टाइप से. ठीक है, इसमें इस टाइप से रहेगा, दैट इज नोन एज टाइमिंग बेल्ट ड्राइव. इसमें देख सकते हो, एक मिनट, टाइमिंग बेल्ट ड्राइव. ठीक है, ये दिस टाइप्स. देखो आपका टाइमिंग बेल्ट ड्राइव कैसे रहता है. यू सी हियर, दिस इज योर टाइमिंग बेल्ट ड्राइव. ठीक है, दिस इज टाइमिंग बेल्ट ड्राइव सिस्टम. ठीक है, इसका ये देखो, टीथ देखो कैसे हैं, इस टाइप से है, मीन्स आपका ट्रेपोजाइडल शेप में है. हियर द टीथ ऑफ द बेल्ट इज हैविंग इन द सेक्शन ऑफ ए ट्रेपोजाइडल शेप. Okay, that's why this is known as timing belt drive. Okay, timing belt, this only belt is known as timing belt. Okay, if the pulley arrangement system is used with the help of this timing belt, then whole the system, this is known as timing belt drive. देखो इस टाइप से देख सकते हो, flat belt drive and V belt drive. Here you see what is the difference between flat belt and V belt. Okay, this is your flat belt, this is your V belt. Okay, this is V belt in which having the teeth of the belt like a V shape. Okay, and flat belt, this is your flat belt in which having the flat belt is section of the belt is flat type. Okay, so chances of power losses more in the flat belt. ओके, क्योंकि आपका वी बेल्ट में जो है पुली का जो ग्रिप है वो अच्छे से पकड़ा रहेगा, तो देर इज नो चांसेस टू लॉसेस ऑफ पावर. इज इट क्लियर. ठीक है, यू सी मेनी ऑफ द प्लेसेस mainly used that is V belt drive. Okay, ठीक है. What is open belt drive system? You see, this is your open belt drive system. Okay, in this the pulley system arranged in this type. This is your driver, which the in which having the number of speed. Okay, and this is your driver member. Okay, so how you decide the which is a tight side or less leg side. Okay, if the tension in the belt is having high, means this is your tension T1, this is tension T2. Okay, so if you see the tension in the belt is T1 is high, means here the belt is having like a straight straight line. Okay, if the belt is having in the straight line, then this is a tight side. Okay, this is your slack side, because after the power transmission, the in this type belt is loose, means there is a no straight line of the belt. Okay, यहाँ पे आपका जो बेल्ट है वो कर्व सेक्शन में रहेगा. Here you see the section or length of the belt is having in the कर्व शेप. Okay, यहाँ पे आपका कर्व शेप में रहेगा. Then you have to decide which side is tight side or which side is slack side. जहाँ पे आपका टेंशन ज्यादा रहेगा उसको टाइट साइड बोलोगे, इसको स्लैक साइड बोलोगे. ठीक है, तो यहाँ से आपका स्पीड रिडक्शन भी निकल जाएगा T1 डिवाइड बाई T2 करके. ठीक है, क्योंकि आपका टेंशन T1 में ये ज्यादा रहेगा. सपोज टेंशन T1 इज 16, टेंशन किस में रहता है 16 न्यूटन, that is force, also that is force 16 newton and 4 newton. So what is the speed reduction ratio, that is 4. ठीक है, तो इस टाइप से निकलेगा. Is it clear? That is open belt drive system, that is cross belt drive system. ओके, यहाँ पे आपको जो सेक्शन है वो क्रॉस टाइप से रहेगा. ठीक है, इस टाइप से. इफ यू सी द अरेंजमेंट ऑफ द बेल्ट लाइक ए क्रॉस सेक्शन या एक्स सेक्शन. ओके, how you decide the which side is slack side or tight side. Okay, so if you want to transmit the power from this driver and this pulley is driver member. Okay, so what is the difference between the open belt drive and the cross belt drive? Anyone tell me what is the difference between cross belt drive and the open belt drive system? Okay, first you see here
Okay, this is your open belt drive system. Okay, so if you want to transmit from, this is your driver member, this is your driver member. Okay, so if you want to transmit, this is this pulley rotate in the clockwise direction, in this direction. Okay, this pulley rotate in clockwise direction, so this pulley also rotate a pulley, this is B pulley. Okay, so in these cases, in the case of a open belt drive system, both pulleys are drive in the same direction. Okay, here clockwise direction and same clockwise direction. You see here open belt drive system, both pulleys are rotated in the same direction. If the first pulley drive rotate in the clockwise direction, then another pulley also rotate clockwise direction. If first pulley rotate anti-clockwise direction, then this is also rotate anti-clockwise direction. But in case of a crossed belt drive, what? In case of a cross belt drive, this is a one direction, this is another direction. Means both pulleys are rotate in the opposite direction. Got it? ये समझ आया कि आपका जो क्रॉस बिल्ट ड्राइव है इसमें क्या होगा, दोनों पुली जो है अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगा. ठीक है, सपोज दिस ड्राइवर दिस पुली रोटेट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन दिस पुली रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है, सो आपके एग्जाम में ये आ सकता है कि इफ यू वांट टू ट्रांसमिट द पावर इन द अपोजिट डायरेक्शन, द पुली मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन. ओके, सो वहां पे आपको याद रखना है दैट इज क्रॉस बेल्ट ड्राइव सिस्टम. ठीक है, आपको सेम डायरेक्शन में अगर पावर ट्रांसमिशन यूज करना है तो उस टाइप में आपको क्रॉस बेल्ट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो बोथ पुली है उसका जो रोटेशन है वो अलग अलग रहेगा. इज इट क्लियर? ठीक है, जैसे आपका ड्राइवर, इफ यू वांट टू ट्रांसमिट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन अनदर पुली इज हैविंग क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये समझ आया जी? दोनों अलग अलग डायरेक्शन में रहेगा. देन दिस इज योर क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव सिस्टम. ठीक है, क्वार्टर टर्न में कैसे रहेगा? इफ यू वांट टू ट्रांसमिट द पावर इन ए perpendicular direction, okay, in this type. Suppose this is one pulley, this is another pulley. If you want to transmit power here to here, that is 90 degree. Okay, if you want to transmit the power from a 90 degree, suppose, or this type, this is a one shaft, this is another shaft. ठीक है, तो इस शाफ्ट से इस शाफ्ट में आपको पावर ट्रांसमिट करना है, तो उस केस में आपको क्वार्टर टर्न बेल्ट ड्राइव सिस्टम यूज करना पड़ेगा. इज इट क्लियर? ठीक है, ये क्लियर है? If you want to transmit the power in a 90 degree or right angle, okay, so which type of belt drive system that is used? That is quarter turn belt drive system. In the question you ask, एग्जाम में आ सकता है ना, दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मे बी आस्क इन योर एग्जाम. ओके, यहाँ से क्लियर होना चाहिए. ठीक है, फिर व्हाट इज क्लच? क्लच के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज क्लच? Clutch is nothing but a mechanical device which is used to connect or disconnect the source of power to the remaining power. Okay, clutch एक तरह से क्या काम करता है? जैसे आप बाइक चलाते हो, if you drive the bike system, okay, so by the press of clutch which is free from drive system and driven system. ठीक है, जैसे आप क्लच दबाते हो तो क्या होता है, जो आपका गियर और पावर का जो अरेंजमेंट है वो क्या हो जाता है, हट जाता है, जिससे आपका पावर से गियर में कनेक्टेड जो है हट जाता है, मीन्स वो डिसएंगेज हो जाता है. ठीक है, इफ यू प्रेस द क्लच सिस्टम, इफ यू प्रेस द क्लच इन द कार और बाइक, देन द डिसकनेक्ट द पावर सोर्सेज टू द अदर रिमेनिंग पार्ट और ट्रांसमिशन सिस्टम. ठीक है, जैसे आप क्लच में क्लच दबाते हो तो क्या होता है, जो आपका इंजन से जो पावर आता है वो क्या होता है, गियर सिस्टम में अवरुद्ध हो जाता है. ठीक है, वहां तक नहीं जा पाता है. ठीक है, इज इट क्लियर? सो व्हाट इज द क्लच? क्लच इज अ मैकेनिकल डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू कनेक्ट और डिसकनेक्ट द पावर फ्रॉम द इंजन पार्ट्स टू द पावर ट्रांसमिशन सिस्टम. ओके, the type of the clutch, that is positive clutch and a friction clutch. Is it clear? There are two types, positive clutch and friction clutch. ठीक है, पॉजिटिव क्लच क्या होगा? इन दिस टाइप ऑफ क्लच, इंगेजिंग क्लच और which are interlocked to produce rigid joint. They are suitable for many of the simpler
and rapid disconnection. ठीक है, if you want to transmit for a simple power transmission, then which type of clutch used, that is positive clutch. ठीक है, एक पॉजिटिव क्लच का एग्जांपल क्या हो जाएगा, जैसे स्क्वायर जॉ क्लच, स्पाइरल जॉ क्लच, ये आपका पॉजिटिव क्लच का एग्जांपल है। आपके एग्जाम में आ सकता है कि जॉ क्लच इज विच टाइप ऑफ क्लच, पॉजिटिव क्लच और फ्रिक्शन क्लच। ठीक है, पॉजिटिव क्लच क्या होगा, दैट इज यूज्ड इन सिंपल नो स्लिप एंड नो हीट जनरेटेड बिकॉज देयर इज ए नो फ्रिक्शन सरफेसेस। ओके, यहाँ पे आपका फ्रिक्शन सरफेसेस नहीं रहेगा, दैट्स व्हाई देयर इज नो चांस ऑफ हीट जनरेटेड। ओके, इट्स कंस्ट्रक्शन इज वेरी इजी, देन नो स्लिप। ओके, फ्रिक्शन क्लच में क्या होगा, इसमें फ्रिक्शन होगा। ओके, नाम से ही स्पष्ट है, फ्रिक्शन क्लच वर्क ऑन द बेसिस ऑफ ए फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, देयर इज ए चांसेस ऑफ स्लिप। ठीक है, बट आपका फ्रिक्शन क्लच का ज्यादा यूज होता है, क्यों, क्योंकि ये इसका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, इज इट क्लियर है। अब इसका मेरिट्स क्या होगा, द फ्रिक्शन सरफेसेस can slip during the engagement which enable the driver to pick up and accelerate the load with the minimum shock। ठीक है, इसका मेरिट्स क्या है, व्हाट इज द फ्रिक्शन क्लच, इफ यू प्रेस द फ्रिक्शन क्लच देन ड्यूरिंग द एंगेजमेंट में क्या होगा, ये ड्राइवर से मतलब तुरंत जो ड्राइवर सिस्टम है वहां से आपको लोड को पिकअप करेगा और आगे एक्सलेट करेगा। ठीक है, इज इट क्लियर। देन another merits क्या है, they can be used at high engagement speed। okay, if you want to change the speed at very high, then which type of clutch used, that is friction clutch। ठीक है, मीन्स आपका ज्यादा स्पीड रहेगा, उस केस में भी आप पावर को ट्रांसमिट करने से मतलब रोक सकते हो एक तरह से। ठीक है, हाई एंगेजमेंट स्पीड में। इज इट क्लियर। ठीक है, इसे एमसीक्यू करेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ से थ्योरी पोर्शन है, इसमें एक जान लो फ्लैट क्लच, इसके क्या क्या टाइप है उसको देख लो। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, इसका एक और मेरिट्स क्या है, स्मूथ इंगेजमेंट विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन क्लच देयर इज चांसेस ऑफ स्मूथ इंगेजमेंट ऑफ द फ्रिक्शन प्लेट्स। क्लच का जो प्लेट रहता है वहां पे आपका फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन होने के चांसेस के कारण क्या होता है, स्मूथ इंगेजमेंट होता है। ठीक है, ड्यू टू द gradual if you want to in the case of a force increase or decrease, which in this type of cases the engagement is very smooth। is it clear। ठीक है, यहाँ पे आप मेजर क्लच का जो टाइप है कौन कौन से हैं, फ्लैट क्लच, कोन क्लच, ये आपका फ्रिक्शन क्लच है, ये सब याद रखना। ठीक है, दैट इज फ्लैट क्लच। फ्लैट क्लच में आपका देयर इज आल्सो टू टाइप्स, सिंगल प्लेट और मल्टीपल क्लच। मल्टीपल क्लच दैट इज यूज्ड इन द स्कूटर बाइक। ठीक है, आपका मल्टीप्लेट क्लच विच इज यूज्ड इन द स्कूटर बाइक, याद रखना। सिंगल प्लेट दैट इज यूज्ड इन द ट्रक सिस्टम, जो आपका लार्ज हैवी मोटर व्हीकल हो गया, वहां पे आपका सिंगल प्लेट का क्लच यूज होता है। ठीक है, ये याद रखना। क्वेश्चन में आ सकता है कि विच टाइप ऑफ प्लेट इज यूज्ड इन द स्कूटर और बाइक, और विच टाइप ऑफ प्लेट क्लच प्लेट यूज्ड इन द हैवी मोटर व्हीकल। okay, so remember it, which type of clutch used, that is in case of single plate clutch scooter bike, in case of multiple plate clutch multiple plate clutch that is used in the scooter or bike, single plate clutch that is used in the truck or heavy duty motor vehicle। is it clear। ठीक है, ये आपका याद रखना, दैट इज फ्रिक्शन क्लच, कोन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच और ड्राई क्लच, मैग्नेटिक करंट क्लच और ये एडी करंट क्लच। ठीक है, ये नाम याद रखना, उतना डीपली में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका टाइप्स ऑफ क्लच है, अनदर टाइप्स सिंगल प्लेट क्लच, मल्टी प्लेट क्लच, कोन क्लच, सेंट्रीफ्यूगल क्लच, हाइड्रोलिक क्लच एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच। ठीक है, इसका पीडीएफ सेंड कर दूंगा आफ्टर द क्लास, वी विल सेंड यू, दिस इज योर क्लच सिस्टम। ठीक है, ये समझ आया। दिस इज योर section view of the clutch, in which having this is the your pedal, with the help of this pedal you can press the force, then after the pressing the force, this is your male shaft or female shaft। okay, there this large shaft or large drum, this is known as male drum and female drum। after pressing the clutch plate, after pressing the clutch, then what, this and this engage। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे जैसे अपन प्रेस करेंगे, इफ यू प्रेस द क्लच, देन मेल एंड फीमेल क्लच दैट इज सेपरेट हो जाता है। ठीक है, इफ यू प्रेस द क्लच
clutch pedal. Okay, then male and female drum will separate. Okay, if you release the clutch pedal, if you release the clutch pedal, if you release the clutch pedal, then what, मेल एंड फीमेल ड्रम दैट इज इंगेज. ठीक है, उस केस में जैसे इंगेज होगा तो क्या होगा, जैसे अपन क्लच पेडल को छोड़ते हैं तो क्या होता है, पावर जो है ट्रांसमिट होने लगता है. इज इट क्लियर? कैसे जी, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो. इफ यू हैव एनी डाउट देन यू आर फ्री टू आस्क. व्हाट इज क्लच, मेल एंड फीमेल ड्रम क्या होता है? ठीक है, ये आपका लीवर है, क्लच का लीवर है. ठीक है, ये इसी में क्लच पेडल में अरेंज रहते हैं. इज इट क्लियर? दिस इज योर क्लच पेडल, क्लच प्लेडर लीवर मैकेनिज्म. ठीक है, यहाँ से ऐसे प्रेस होता है तो ये क्या होता है, डिसंगेज हो जाता है. और जैसे ही अपन क्लच को रिलीज करते हैं तो क्या होता है, फिर से इंगेज हो जाता है. ठीक है, इज इट क्लियर? इसमें और उतना डीपली में जाने की जरूरत नहीं है. दिस इज योर एसपी लाइन शाफ्ट, दिस इज योर एसपी लाइन शाफ्ट बोलते हैं इसको. और यहाँ पे स्प्रिंग क्यों रखा हुआ है, स्प्रिंग, वाई हियर प्लेस्ड द स्प्रिंग. ओके, इफ यू release the load by the clutch pedal, then this section automatically back to the initial position. ठीक है, यहाँ पे जैसे अपन प्रेशर को रिलीज करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपके इनिशियल पोजीशन में चला जाता है, मींस ये फिर से इंगेज हो जाता है. ठीक है, आपके क्वेश्चन में आ सकता है कि द क्लच इज प्लेस्ड वेयर. इन द क्वेश्चन यू आस्क द द प्लेस ऑफ क्लच इज वेयर, इंजन. ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना इंजन, देन उसके बाद क्लच रहेगा, देन पावर सिस्टम, सॉरी ट्रांसमिशन सिस्टम. पावर सिस्टम इज आल्सो इंजन. ठीक है, दिस इज योर ट्रांसमिशन सिस्टम. ठीक है, सो वेयर क्लच इज प्लेस्ड दैट इज इंजन एंड इन बिटवीन द इंजन एंड ट्रांसमिशन सिस्टम. इज इट क्लियर जी? मीन्स आपका जो क्लच है वो कहाँ पे रहता है, इंजन, जहाँ से आपको पावर मिलता है, और पावर सिस्टम या फिर ट्रांसमिशन सिस्टम. ट्रांसमिशन सिस्टम आपका कहाँ पे रहता है, व्हील में रहता है. ठीक है, तो दोनों के बीच जो है क्लच रहता है. क्लच बेसिकली इंगेज और डिसंगेज का काम करता है, उसके मदद से अपन गियर को ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं इजिली. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ क्लच वी विल चेंज इजिली द गियर. ठीक है, ठीक है, आप टाइप्स ऑफ गियर देखो. फर्स्ट व्हाट वी हैव कवर्ड दैट इज बेल्ट ड्राइव सिस्टम, बेल्ट एंड बेल्ट ड्राइव सिस्टम. देन व्हाट इज क्लच, देन अगेन गियर. दिस इज अनदर टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन मैकेनिज्म. ओके, जैसे आपका बेल्ट पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज किया जाता है, उसी तरह गियर को भी अपन यूज करते हैं पावर ट्रांसमिशन के लिए. ठीक है, गियर और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेल्ट ड्राइव सिस्टम एंड गियर ड्राइव सिस्टम. ओके, यहाँ पे आपका दोनों का डिफरेंस बहुत, देयर इज ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन द बेल्ट ड्राइव सिस्टम एंड गियर ड्राइव सिस्टम. ओके, ठीक है, ये याद रखना, जो आपका बेल्ट ड्राइव सिस्टम है उसको निगेटिव ड्राइव सिस्टम भी बोलते हैं. बेल्ट ड्राइव सिस्टम आल्सो नोन एज निगेटिव, निगेटिव ड्राइव ना. और जो आपका गियर ड्राइव है, गियर ड्राइव सिस्टम आल्सो नोन एज पॉजिटिव ड्राइव. व्हाई पॉजिटिव ड्राइव? बिकॉज देयर इज नो चांसेस ऑफ slip. In case of belt drive system, in case of belt drive system, there is chances of slip. Slipping occurs in the belt drive system. That's why this is known as negative drive system. Okay, but in case of a gear system, there is no chance of slip, because in which having the number of teeth are interconnected to each other. Okay, that's why there is no chances of slip. So that's why this gear drive system, which is called a positive drive system. ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि पॉजिटिव ड्राइव सिस्टम कौन सा है. ठीक है, तो आपको याद रखना है. ठीक है, इज इट क्लियर? ये समझ आया गियर ड्राइव सिस्टम को अपन पॉजिटिव ड्राइव सिस्टम क्यों बोलते हैं. ठीक है, इज इट क्लियर?
ठीक है. So remember it, belt drive system, that is known as negative drive system. Why? Because belt drive system in having or occurs chances of sleep, but in case of a gear drive system which is known as positive drive system. Why positive drive system? Because in which there is no chances of sleep. स्लीप का कोई चांस नहीं रहता, यहाँ पे आपका स्लीप रहेगा, जिसके कारण आपका पावर लॉसेस होगा. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज नेगेटिव. ठीक है. व्हाट इज गियर? गियर इज नथिंग बट ए टूथ व्हील इन विच हैविंग द नंबर ऑफ teeth, okay, which is used to transmit the energy or power from one gear to another gear. ठीक है. This is widely used as a mechanical device in which having the number of teeth. ठीक है. These teeth are having in a cylindrical or cone shape. Okay, if you study more and revise more times, then ठीक है, इससे रिलेटेड इफ आफ्टर द थ्योरी पोर्शन वी विल कवर द एमसीक्यू क्वेश्चन, देन यू गॉट ए आइडिया रिगार्डिंग व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क इन योर एग्जाम. ओके, so I will try it to fill the question bank. Okay, ठीक है. देन उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन आप गया है अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ द टीथ and according to the axis of the gear. There are many types. Okay, so if the gear, if the shaft of the gears are having in a पैरेलल गियर किसको बोलेंगे? जिसमें आपका जो टीथ है, ठीक है, दिस इज योर गियर इन विच हैविंग टीथ लाइक पैरेलल. ओके, पैरेलल टू द शाफ्ट इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज नोन एज स्पर गियर. एग्जाम से फिगर से क्लियर हो जाएगा. ठीक है. तो ये याद रखना, पैरेलल गियर में कौन कौन सा आ जाएगा? स्पर गियर आ जाएगा, हेलिकल गियर आ जाएगा, एंड डबल हेलिकल गियर एंड हेरिंगबोन गियर आ जाएगा. व्हाट आर द परपेंडिकुलर एक्सिस गियर? दैट इज non intersection and intersection. There is also two types: intersecting gears in which having spiral gears, sorry, in which having the gear teeth arrangement in these types. Perpendicular, this is one shaft, this is another shaft. Okay, if you want to transmit perpendicular direction, so that is intersecting, because one shaft is here, another shaft is here. Okay, so both shafts are intersecting this point. Okay, यहाँ पे कनेक्टेड नहीं रहेगा, लेकिन जैसे इसका एक्सिस को बढ़ाओगे तो यहाँ पे आपका इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा. ओके, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इंटरसेक्टिंग गियर्स. ठीक है. आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटरसेक्टिंग गियर. तो यहाँ पे याद रखना, स्पाइरल गियर इज द इंटरसेक्टिंग गियर. ठीक है. स्पाइरल गियर एंड बेवल गियर both are intersecting gear. Is it clear? Spiral gear, this is also intersecting gear. Is it clear? Then non intersecting and non parallel, जिसमें आपका ये आपका फर्स्ट गियर है, ठीक है, और दूसरा गियर ये है. ठीक है, जिसमें एक रेक पिनियन भी रहता है, ये रेक और ये पिनियन रहता है. ठीक है. दिस टाइप ऑफ गियर जनरली यूज्ड इन द स्टीयरिंग ऑफ द car steering system, mainly use the rack pinion type of gear arrangement system, because there is a transmit the rotational speed into translational speed. Okay, this is your small, because in the steering system, in the car steering system, if you want to transmit power from rotational speed to translatory motion, okay, suppose this is your car wheel, okay, and this is your steering. Okay, so if you want to transmit the power, that is rotational power into translatory power means this one here your wheel to rotate either left side or right side with the help of steering. Okay, so with the help of steering system you can turn this vehicle in the left side or right side. Okay, so याद रखना, ब्रेक एंड पिनियन किसमें यूज होता है? आपका स्टीयरिंग गियर टाइप अरेंजमेंट में. ये आपका स्टीयरिंग ऐसे रहेगा, डबल ही रहता है. ठीक है, स्टीयरिंग. ठीक है, दैट्स ब्रेक एंड पिनियन गियर अरेंजमेंट यूज्ड इन द स्टीयरिंग कार स्टीयरिंग में. ठीक है, ये दोनों आपका नॉन इंटरसेक्टिंग नॉन पैरेलल शाफ्ट है. ठीक है, याद रखना. दिस टाइप ऑफ आपके एग्जाम में आ सकता है कि ब्रेक एंड पिनियन गियर और
Warm gear is a non-intersecting or intersecting shaft, non-intersecting or non-parallel gear. ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना. ठीक है, व्हाट इज गियर रेशियो? गियर रेशियो इज नथिंग बट ए नंबर ऑफ इनपुट पावर टू द आउटपुट पावर, और रेशियो ऑफ द इनपुट, रेशियो ऑफ द ड्राइवर टीथ और ड्राइवर टीथ, और रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द टीथ ऑन द गियर और पिनियन. ठीक है, जैसे आपको उसमें निकाले थे इसमें भी वैसी रहेगा. ठीक है, उसमें आपका स्पीड रिडक्शन रेशियो था, इसमें क्या रह जाएगा? गियर रेशियो. ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट द गियर रेशियो? फर्स्ट, if the number of teeth of the smaller gear is 18, okay, if the number of teeth of larger gear that is 54. So if you want to find out gear ratio, that is GR equal to क्या हो जाएगा? 54. that is, this is your gear ना, bigger size gear that is known as gear and small size gear that is known as pinion. ठीक है, जो आपका लार्जर जो गियर रहेगा उसको अपन गियर बोलेंगे और छोटा साइज को क्या बोलेंगे? पिनियन बोलेंगे. ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट द गियर रेशियो? 54 डिवाइड बाई नंबर ऑफ teeth of the driver gear that is larger gear and the number of teeth of the driver gear that is smaller gear. 54 divided by 18. So what is the gear ratio? That is 3. Okay, ये क्लियर है? हाउ टू कैलकुलेट द गियर रेशियो? number of teeth, suppose if you ask speed of the 64, okay, 64 rpm. If the speed of the pinion gear is 64 rpm and if the speed of the gear is 16 rpm, because obvious, the larger size gear rotate very small speed, okay, and large small size gear rotate higher speed. Okay, so what is the gear ratio? If the speed of the pinion gear is 64 and the speed of the gear is 16 rpm, क्या होगा? What is the gear ratio? वहां पे बताओ, आपका इस टाइप से आ सकता है. ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट द गियर रेशियो इन टर्म्स ऑफ स्पीड, डायमीटर एंड टीथ, इस टाइप से आ सकता है. ठीक है, तो यू रिमेंबर द गियर रेशियो. ठीक है, या आपका T1 मान लो इसको, या आपको T2 मान लो. ठीक है, तो T1 डिवाइड बाई T2 रह जाएगा एंड D1 डिवाइड बाई D2 रह जाएगा, और ये आपका एंटी प्रोपोर्शनल रहेगा, N2 डिवाइड बाई N1. दिस इज योर गियर रेशियो. इज इट क्लियर? गियर रेशियो. ठीक है, गियर रेशियो इज नथिंग बट ए number of teeth of the gear that is larger gear and number of teeth of the gear that is smaller gear. ठीक है, T1 divided by T2 and also diameter of the bigger gear divided by diameter of the smaller gear. Also speed of the smaller gear, because speed of the smaller gear is having very high. ठीक है, तो आपका जो gear ratio है ये आपका 1 से ज्यादा रहेगा. ठीक है, the gear ratio will be more than 1. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? Good, Monica. There is gear ratio that is 1. What? 4. 64 divided by 16. Is it clear? तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो याद रखना. एक यहाँ से भी आता है ना, एक याद रखना. What is the formula of power? Power is nothing but a T omega. ठीक है, ये आपका रिलेशन एक बार बता देता हूँ. देखो एक मिनट. गियर रेशियो, पावर का फार्मूला क्या होता है? T इंटू ओमेगा. ठीक है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ पावर? T इंटू ओमेगा. T इज द टॉर्क, ठीक है, एंड ओमेगा इज द स्पीड. ठीक है, P इज द पावर. ठीक है, सो व्हाट गियर रेशियो, इसमें पूरा आपका खेल है. ठीक है, गियर रेशियो फर्स्ट लार्जर गियर, ये आपका स्मॉल गियर है, ये आपका लार्जर गियर है. इसका T1 रहेगा, इसका D1 रहेगा और इसका N1 रहेगा और ओमेगा 1. ओमेगा 1 और N1 में डिफरेंस समझ आता है ना? What do you mean by N1 and omega 1? Omega 1 is nothing but a RPM. Sorry, radian per second. Omega is radian per second and RPM N is रोटेशन पर मिनट. RPM में रहेगा ये. ठीक है, दोनों स्पीड है, बट
omega in terms of radian per second, and speed rpm, that is n. Okay, so what is the gear ratio? T1 divided by T2 equal to D1 divided by D2 and equal to N2 divided by N1. Okay, because the larger gear rotate very small speed or less speed as compared to the another gear. इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे देखो पर प्रोपोर्शनल देखो, ओमेगा के प्रोपोर्शनल रहेगा, P इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा एंड T इज प्रोपोर्शनल टू एंटी प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो एंटी प्रोपोर्शनल में क्या होगा, टार्क को टी से टाउ से डिनोट करते हैं ना, इसको टाउ से डिनोट कर लो, क्योंकि आपका टी टीथ है, टी इज द नंबर ऑफ टीथ, ये आपका टाउ हो जाएगा। ठीक है, तो टाउ ओमेगा क्या हो जाएगा, टाउ वन डिवाइड बाई टाउ टू हो जाएगा, और पावर क्या हो जाएगा, पी टू डिवाइड बाई पी वन। ओके, तो ये फार्मूला याद रखना, फाइंड आउट, इफ यू वांट टू फाइंड आउट गियर रेशियो, then you remember this formula in terms of t is the number of teeth, d is the diameter, n is the rpm, और rpm और ओमेगा बोल सकते हैं इसी को। ठीक है, ये टाउ आपका टॉर्क रहेगा। ठीक है, और e is the पावर। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना। गियर रेशियो जनरली मोर देन 1 रहेगा, 1 से ज्यादा रहेगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यहाँ पे याद एक याद रखना, मैक्सिमम पावर मैक्सिमम गियर रेशियो किसका होता है, दैट इज वार्म एंड वार्म व्हील, वार्म एंड वार्म व्हील, ये आपका एक तरह से गियर अरेंजमेंट है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, ये इफ यू वांट टू इफ यू आस्क द इन द क्वेश्चन मैक्सिमम गियर रेशियो, इसमें आपका मैक्सिमम गियर रेशियो रहेगा, मैक्सिमम गियर रेशियो। जनरली मेनी ऑफ द एग्जामिनेशन आस्क द क्वेश्चन दैट the maximum gear ratio is available in which type of gear, so remember it, the maximum gear ratio available in the वार्म एंड वार्म व्हील गियर। ओके, तो यहाँ पे याद रखना है, जो आपका वार्म एंड वार्म व्हील गियर है वहां पे आप मैक्सिमम गियर रेशियो रहेगा। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा 20 से ज्यादा रहता है ना, इसमें 20 से ज्यादा ही रहता है गियर रेशियो, किसमें, वार्म एंड वार्म व्हील में। ठीक है, ये किस में रहेगा, जनरली दिस इज यूज्ड इन द स्टीयरिंग व्हील, कार स्टीयरिंग समटाइम्स। क्लियर है? देखो इस टाइप से टाइप्स ऑफ गियर अरेंजमेंट, you see this is your types of gear। okay, यहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। दिस इज स्पूर गियर, स्पर गियर, सॉरी। ओके, दिस इज योर स्पर गियर, फर्स्ट वन। दिस इज योर स्पर गियर इन विच हैविंग द टीथ आर पैरेलल टू द, दिस इज योर शाफ्ट ना, शाफ्ट एक्सिस आर इन दिस डायरेक्शन। ओके, so the teeth का direction भी in this direction, so both the teeth and the axis of the shafts are parallel, so which type of gear, that is spur gear। in the question you ask the which type of gear in which having the teeth and shaft, gear shaft। okay, so if the gear shaft and teeth are having parallel, ठीक है, यहाँ पे आपका टीथ है और गियर शाफ्ट है, दोनों पैरेलल रहेगा, तो उस केस में कौन से गियर बोलेंगे, दैट इज स्पर गियर। इज इट क्लियर? ठीक है, देन अगेन हेलिकल गियर, हेलिकल गियर में क्या रहेगा, यहाँ पे देखो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पर गियर एंड हेलिकल गियर। यू सी हियर इन द स्पर, इन द हेलिकल गियर द टीथ आर अरेंज्ड इन दिस टाइप लाइक ए कर्व शेप। ओके, यहाँ पे आपका जो टीथ है वो कर्व में रहेगा इन दिस टाइप, दिख रहा है यहाँ पे, इसमें आपका पैरेलल नहीं रहेगा। यू सी हियर स्पर गियर टीथ एंड हेलिकल गियर टीथ, in case of a spur gear the teeth are parallel, but in case of a helical gear the teeth are having in a curve shape। ठीक है, यहाँ पे आपका जो टीथ है वो कर्व शेप में रहेगा। इज इट क्लियर? दिस इज आल्सो हेलिकल गियर, यू सी हियर द टीथ आर हैविंग इन दिस टाइप्स, इन दिस सेगमेंट। ओके, इसी को हेरिंग बोन गियर भी कहते हैं, हेलिकल गियर का अरेंजमेंट रहेगा दोनों साइड से, इसको हेरिंग बोन गियर बोलेंगे, लाइक ए दिस टाइप। देखो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ 2 helical gears are arranged in these types। okay, then in the question you ask in the exam that
if the two helical gears are arranged, then which type of gear is generated? So you remember it, herringbone gear. Okay, if the here two helical gears are arranged, ठीक है, यहाँ पे दो हेलिकल गियर हैं, देखो इस हेलिकल गियर को क्या बोलेंगे? हेरिंगबोन गियर बोलेंगे, ठीक है। ये आपका बेवल गियर है। सब हियर द बोथ एक्सिस आर इंटरसेक्टिंग, देखो यहाँ पे एक ये एक्सिस है और ये एक्सिस है, यहाँ पे आपका दोनों एक्सिस जो है इंटरसेक्ट करेगा, दैट इज बेवल गियर। Okay, your examination you ask which type of gear used to transmit the power perpendicular direction. Okay, if you want to transmit the power in a 90 degree or perpendicular direction, then which type of gear used? That is bevel gear, ठीक है। यहाँ पे आपका बेवल गियर है, ठीक है, तो ये वाला और इस टाइप से पावर ट्रांसमिट करेगा, जैसे आपका बेवल गियर का दिखा देता हूँ, ठीक है। यू सी हियर, इफ यू वांट टू ट्रांसमिट पावर इन दिस टाइप, दैट इज बेवल गियर, ठीक है। देखो आपका इस टाइप से रहेगा। इफ यू वांट टू ट्रांसमिट द पावर like this type, this is one gear in which having the shaft in this section and another gear having shaft in these types. Okay, so both shafts are intersecting each other. Okay, that is bevel gear, ठीक है। यहाँ से क्लियर है, ठीक है। तो you remember it, if you want to transmit the power in a perpendicular direction, then which type of gear used? That is bevel gear. Okay, this is your screw gear in which having the screw type, the gear shape having in the screw type, these types. Okay, this is known as screw gear. This is your spiral gear in which having, this is a spiral bevel gear. Okay, why bevel gear and spiral bevel gear? What is difference between spiral bevel gear and bevel gear? You see here, in the spiral bevel gear, the teeth are having in the spherical form. Okay, you see here, this is your spiral bevel gear. Okay, in which teeth are having in a curved shape. You see here, this is curved shape of the teeth, ठीक है। दिस इज योर वार्म एंड वार्मिंग, यू रिमेंबर इट, मैक्सिमम गियर रेशियो, मैक्सिमम गियर रेशियो, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है। वार्म वार्म गियर दैट इज यूज्ड टू लार्ज स्पीड रेशियो, ठीक है। जैसे आपका ये जैसे 15 की स्पीड में घूम रहा है, तो ये कितना घूमेगा? 15 का 20 गुना, 300 की स्पीड से घूमेगा, ठीक है। ये बेल गियर का यही डिफरेंस है, gear ratio what? In the warm gear the gear ratio generally more than 20, more than 20 means if this gear rotate 15 meter per second, so this gear rotate 300 meter per second, that's important. Okay, that's very important, so remember it, warm gear which is used for maximum reduction of power. ओके, मीन्स आपका यहाँ पे आपका कम पावर है, यहाँ पे ज्यादा पावर है, या फिर यहाँ पे ज्यादा पावर है, यहाँ पे कम पावर है, ठीक है। तो जनरली जैसे आपका 1440 है और 60 है, ठीक है, तो इस टाइप से रहता है 1440 और 60। जैसे आपका एक मिनट, जैसे आपका छोटा सा ये 1440 की स्पीड से घूमेगा और ये 60 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से घूमेगा, so larger gear ratio is possible na with the help of gear warm gear. This is your meter gear. Okay, इसमें क्या है, दोनों आपका कर्व शेप में रहेगा इस टाइप से। बेवल गियर और मीटर गियर बहुत डिफरेंस है, ठीक है। दिस इज योर इंटरनल गियर, यू सी व्हाट इज द इंटरनल गियर। इंटरनल गियर में क्या होगा, देखो यहाँ पे एक मिनट, इसका एक एनिमेशन वीडियो दिखा देता हूँ इंटरनल गियर का, ठीक है, वहां से अच्छे क्लियर हो जाएगा। बिकॉज इंटरनल गियर हैविंग द बोथ द गियर्स आर रोटेट इन ए सेम डायरेक्शन। इंटरनल गियर, you see here, this is your internal gear, okay, in which both the gear, that is small gear, that is known as pinion. Okay, this is your pinion and this is your larger gear, and the benefits is that both the gears are rotated in a same direction, ठीक है। यहाँ पे आपका जो दोनों गियर है वो सेम डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, यू सी हियर। ओके, क्वेश्चन में आ सकता है कि इंटरनल गियर, in the internal gear both gears are
rotate in the same direction or opposite direction. तो वहाँ पे याद रखना, you remember the in the internal gear both the shafts are rotated in a same direction. Okay, ये आपका इंटरनल गियर हो जाएगा. एक्सटर्नल गियर में क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल गियर में अलग अलग होगा. Okay, this is your external gear in which both the gears are rotated in the opposite direction. Okay, if you rotate this gear in the clockwise direction, this gear rotate also anti-clockwise direction. Okay, this is your measure difference between the internal gear and external gear. Okay, in the case of internal gear both the gears are rotated in the same direction, but in case of a external gear both the gears are rotated in the opposite direction. Okay, if first gear rotate in the clockwise direction, then another gear rotate also anti-clockwise direction. So you remember this point. Okay, then another that is rack and pinion gear. What rack and pinion? Same. Worm and gear used and rack and pinion both are having the same application, but in the question you ask this is used in the steering, कार स्टीयरिंग. ठीक है, स्टीयरिंग कार में यूज होता है, कार स्टीयरिंग में जनरली यूज होता है. ठीक है, ये याद रखना. इन द क्वेश्चन यू आस्क इन द कार स्टीयरिंग सिस्टम विच टाइप ऑफ गियर यूज्ड, सो यू रिमेंबर द रेक एंड पिनियन गियर. ठीक है, तो यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन. हाइपोइड गियर देखो, हाइपोइड गियर का अरेंजमेंट इस टाइप से रहेगा. ठीक है, इज इट क्लियर? एनी डाउट्स? ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन ये करेंगे थोड़ा सा आपका गियर का जो टर्मिनोलॉजी है, फिर उससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे, तो यहाँ से अच्छे से क्लियर हो जाएगा. इसमें अपन बेल्ट, क्लच और गियर से रिलेटेड एमसीक्यू लिया हूँ. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये अपन डिस्कस करेंगे, तो इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप टॉपिक से रिलेटेड इफ यू कवर द टॉपिक देन विच टाइप ऑफ क्वेश्चन जनरली अराइव्ड इन द योर एग्जाम. ओके, सो दैट्स पॉइंट ऑफ व्यू, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे. ठीक है, इफ यू हैव नो डाउट्स देन class over now.